हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं यूनिफॉर्म क्वांटिटी को चेक करने के लिए। तो हियर वी हैव अ प्रॉब्लम दैट इज द फंक्शन इज 1 by x and we have to show it is not continuous in the in the open interval 0 comma 1 है ना, and the close in the one side we can take or not, it's not depending on one, but it's here the one is 0 is included. So let us see the excluded, but let us see कि कैसे। तो फंक्शन हमारे पास ओपन जीरो और वन क्लोज पे डिफाइंड है, सेमी इंटरवल पे डिफाइंड है। तो इसको चेक करना है कि इट इज नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस, बट इट इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन बिकॉज इट इज नॉट डिफाइंड ऑन जीरो एज वेल। So we can have result, just clearly we can say clearly the function is continuous. The function is continuous on this control 0 comma 1. Okay, so it will be यूनिफॉर्मली कब होगा, जब इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन अ पॉइंट थ्रू आउट द इंटरवल, है ना। कॉन्टिन्यूस तो है बट ये पॉइंट पे ना डिपेंड करे डेल्टा, है ना। तो वी कैन, हाउ वी कैन राइट हियर, इट विल बी यूनिफॉर्मली continuous on given interval the given interval if for a given epsilon positive there exists a delta positive independent of choice of point this condition is to be 1 upon x minus 1 upon c less than epsilon when this is the definition for the use, ये हमें प्रूव करना है। तो इसको थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करें तो यू कैन इजीली सी दिस इज c माइनस x अपॉन दिस विल बी cx when this x is lying between c plus delta and this is our c minus, okay। तो अगर हम यहाँ पर c को एज अ डेल्टा पुट करते हैं, टेकिंग इफ वी टेक this is c is equals to delta, then the interval, then the interval this one c minus delta and c plus delta becomes this is 0 and this is 2 delta. And also you can just have also the condition one must hold for any and in this interval, in this control, okay। But we can have, you can see this will be delta minus x upon delta s, हमने यहाँ पर c की जगह पर डेल्टा रखा है, तो it will be tending to infinity as you are tending x to 0 because we are taking values 0 to the interval 1, है ना। 0 to 1 हम ले रहे हैं तो x हम कुछ भी रख सकते हैं, x is an arbitrary point, so it means x is whenever this x will be tending to 0,
this value will be tending to infinity. It means this value will be tending to infinity. It will be not lesser than epsilon. It will be not remains lesser than epsilon. It violates our condition. So it means that you can say, so if choose x sufficiently close to 0, sufficiently close to 0, 0, then the condition 1 will be violated. ओके, तो इसका मतलब ये है कि वो कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, एट मीन फंक्शन इज नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस, hence you can say, hence this 1 upon x is not uniformly continuous. Continuous on this interval 0, 1. Okay, so this is the we are using the condition of UC, but the UC condition will not satisfy here because x is towards the 0 as well. उस केस में हमारे पास जो c माइनस एक्स अपॉन सी एक्स है, दैट विल बी टेंडिंग टू इन्फिनिटी. ओके, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? This is the, we have fx is equals to x square, and this is, we have to show this is u. We have to show so that function fx is just equal to x square is uniformly continuous on क्लोज इंटरवल -1, 1. अच्छा, ये तो हम डायरेक्टली भी कह सकते हैं, बिकॉज दिस फंक्शन एक्स स्क्वायर इज कॉन्टिन्यूअस इन दिस इंटरवल -1 to 1, एंड फंक्शन दिस इंटरवल इज क्लोज, देन इट विल बी डेफिनेटली यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस. लेकिन लेट अस प्रूव बाय द डेफिनेशन, है ना, डेफिनेशन से इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं. So if I'm just taking, let this point x1, x2 be any 2 points. Be any 2 points of -1, 1. Then let us take it is value of the function at this point. This is x1 minus f of x2, and you can have this is x1 square minus x2 square, and from there you will get mod of x1 minus x2 and mod of x1 plus x2. What the maximum value of this will be? Okay, if I'm just taking this is lesser than epsilon, so what will be the maximum value? It will be this mod of x1 plus x2 is less or equal to 2. ठीक, मैक्सिमम वैल्यू इसकी 2 ही हो सकती है, बिकॉज वी आर मूविंग -1 to 1. ओके, तो जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है दैट विल बी 2. तो यू कैन इजिली सी कि if you are, and so you can easily see this will be when we are taking this mod of x1 minus x2 is less than epsilon by 2, then this condition will be hold, and which is I'm taking delta. So it means here delta is not depending on the points. So where you can say where this delta is independent
independent of the choice of x1 and x2. Okay, so thus we can say for any epsilon positive, there exists delta which is equal to epsilon by 2, such that this condition will be fulfilled. UC condition will be fulfilled. F of x1 minus f of x2 is less than epsilon. So when this is mod of x1 minus x2 is less than 1 by 2 of epsilon, which is delta. So thus function is uniformly continuous. So by definition, we can able to prove it. And by result, we can say it is obvious. The function f is uniformly continuous. Continuous on this interval minus 1. Okay, so आई होप कि कैसे हमें क्वेश्चंस करना है, कैसे हमें देखना है. We have to find a delta for the epsilon for such that this delta is not depending on the point. It depending only on epsilon. Okay, so it should be independent the choice of the point. So this is the solutions of the problem. तो इसी तरीके कुछ प्रॉब्लम्स आपके टेक्स्ट बुक में पूछे जाएंगे, एक्सरसाइजेस में भी 2-4 क्वेश्चंस हैं, तो उनको आप ट्राई करिए और आई होप कि आप कर पाएंगे. ओके, so we will meet in the next lecture. Thank you so much for watching and learning from